Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Yusra Khan, welcoming you all in this amazing concept brought to you by ICI Pakistan Pharmaceuticals. The name of this amazing initiative is Health 360. Like last year, we did Think Health 21. This year again, ICI Pakistan Pharmaceuticals is bringing to you all an amazing concept. This concept is all about serving as a forum that brings together a large pool of many diverse minds from the healthcare community and foster a dialogue on healthcare issues most persistent to our society today. We are very much interested and we are very much honored to have you all on board. We are focusing in this conference to have multiple discussions, not only those who are catering to our doctor community, but also for the public awareness purposes. Today's session is brought to you by Liaquat National Hospital and Medical College. We are very much thankful to Liaquat National Hospital for this collaboration today. Let me quickly take you guys towards our speakers' details. For our today's session, we'll be having with us Dr. Kahkashan Tahir. She is Chairperson, Research and Skills Development Center Committee, Liaquat National Hospital, Karachi. Along with her, we'll also have Mr. Ahmed Ali, who's Chief Instructor at Research and Skills Development Center, Liaquat National Hospital. And also we'll have with us Imad Ali Rajput. He is a surgical and imaging technologist. Along with that, he is also instructor in research and skills development center, Liaquat National Hospital. So what is the topic that we are going to talk about today? Guys, our today's session is all about public awareness. And as we all know that we have to save lives, because saving a life is not only about saving one life, but saving one life can actually save a home. And we can all be heroes by means of doing that. But is it really very difficult to learn life-saving skills? If we look around and if we approach right authorities like Liaquat National Hospital's Skill and Development Center today, I think we can learn a lot. It takes 3 to 4 minutes for a blocked airway to result in death. However, if we look at the current scenario across Pakistan, it almost takes 8 minutes for an ambulance or any medical assistance to reach to any such casualty. So what we can do in the meantime is provide first aid or first assistance or medical assistance to that casualty or the patient. And to know all about it, we have here with us the panel of experts from Liaquat National Hospital. So without further ado, let's go ahead and welcome our first speaker, who is Dr. Kahkashan Tahir. Hello, Dr. Kahkashan. Welcome to our today's conversation. Thank you so much for taking out this time. Thank you, Dr. Yusra, for inviting. It's a pleasure being a part of this conference. I think these activities are really important as far as the public awareness is concerned, because as you just mentioned the significance, the conversation we were having earlier about the first aid and CPR awareness programs, it is really important for the public to know the significance of saving a life. As the statistics you just mentioned, it really takes time to ambulance for reaching any victim in Pakistan, particularly having said the ground realities. So I think everyone needs to know what are the basics and the aim and objective of especially my speech today. Not a speech specifically, just a briefing about the first aid is that why we should learn CPR and first aid, and why is it important to be given as a bystander to a victim or a patient, because it can you can buy time. It's the basic idea is buy as much time as possible until the patient reaches the hospital facility. Right, so my area of concern,
you had already seen my expertise. It's a brief introduction about myself. I have been a resuscitation expert in the field for almost 20 years now, and I've got an experience of nationally and internationally, not only training the students, but the master trainers and the accreditation of the centers for these kinds of trainings worldwide. So my area of research says, if everyone is trained, and if not everyone, at least one member of the family should be trained for these techniques, so that God forbid, if we are the victim someday, our family knows what to do, at least. So the basic idea of first aid is, and if I can define it in a very simple way, is all the techniques, all the maneuvers which you can perform to stabilize, to have the stability in the patient. As you mentioned, the airway and the circulation. These are the two basics. If I define CPR, CPR is cardiopulmonary resuscitation. Cardio is heart, pulmonary is lungs. And why do we want to survive these two organs is because the heart circulates the blood, and the blood has the oxygen which tissues require. So the basic idea of first aid is to save these two organs. So we try to not let the patient go into that emergency situation that these two organs are dead and they are irreversibly damaged. So what we do in first aid is that we try to save these techniques. My other colleagues will speak enough on this, and then will be know what to do in what situations, and there will be demos as well. And just to categorize first aid emergencies, there can be three categories: the medical emergencies, environmental emergencies, and injury emergencies. As the name indicates, the environmental states the heat and cold emergencies, which we are not very much familiar. We do not really come across with the cold ones in Karachi particularly, but we do have heat emergencies. And then the injury emergencies got, unfortunately, it's very common because the traffic accidents and other injuries are there. And the medical emergencies, like any heart attack, any sugar, if God forbid sugar goes low on a patient, what does it do? And then the respiratory emergencies like asthma, severe asthmatic attack, and so. So we'll discuss these later. So hopefully you'll have a good time today together. Thank you. Over to Dr. Yusra. Thank you very much, Dr. Kakasha Tahir. And indeed, it was a privilege to have you on board. And as they say, that learning first aid skills is not that easy, but it's not that difficult if you have the will and also the right authorities and qualified trainers to let you know what to do and what not to do. As there are multiple techniques and skills that we have to learn, but for first aid, correct me if I'm wrong, Dr. Kakasha, I have usually heard that more than knowing what to do, it's highly important to understand what not to do when it comes to giving first aid, because at times what we are doing is mishandling patients also. So guys, with this, I'll be moving ahead towards our next speaker, and as Dr. Kakasha already mentioned, we'll be distributing our today's session in multiple segments. This was a very brief introduction about first aid and its aims and objectives. After this, we'll be going ahead and we'll be trying our level best to learn most about first aid essentials, its kits, because whenever I think of first aid box, I think of a very bright orange colored box which had a lot of stuff. It has like medicines also, at times splints, bandages, but when it comes to a proper standard first aid kit, what should it have? So to know about that, I'll move ahead to our next speaker, and Dr. Ahmed will be joining us with me. So let's welcome him over here. Dr. Thank Ahmed. you, Dr. Kakasha Tahir, and thank you.
So guys, welcome back. As you have already seen on our welcome slide, we have here with us our next speaker. He is Ahmed Ali. He is Chief Instructor of Research and Skills Development Center, Liaquat National Hospital, Karachi. Welcome on board, Dr. Ahmed. कैसे हैं आप? जी थैंक यू ठीक हैं Sir, over to you. I would like to learn a lot from you about first aid kit and its essentials. ओके थैंक यू डॉक्टर युसरा एंड थैंक यू डॉक्टर कहकशां ताहिर कि आपने हमें फर्स्ट एड पे डिस्कशन पे मौका दिया फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू दिस फर्स्ट एड किट ठीक है फर्स्ट एड किट ये मार्केट में अवेलेबल है फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए राइट ये ट्रायंगुलर बैंडेज है अगर कैमरा दिखा सके तो ट्रायंगुलर बैंडेज तकूनी पट्टी कहते हैं और ये 2 होनी चाहिए कहते हैं कि ये फर्स्ट एड के अंदर बेसिक इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है फर्स्ट एड बॉक्स का अगर ये आपके पास मौजूद है तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं फिर आपके पास जो है प्रेशर बैंडेज होनी चाहिए प्रेशर बैंडेज बहुत सारे साइजेस आते हैं इसके 1 इंच से स्टार्ट होता है फिर 2 इंच फिर 4 इंच और फिर 6 इंच ठीक है तो 1 और 2 इंच हम फिंगर के लिए यूज करते हैं और जो है 4 इंच हम अपर लिम्ब के लिए यूज करते हैं या बाजू के लिए आर्म के लिए और 6 इंच जो है हम लेग के लिए यूज करते हैं ठीक है उसके बाद आपके पास जो है डाइसेक्टिंग फोर्सेप होनी चाहिए इससे आप जो है ड्रेसिंग करेंगे आप जो है स्वैब बना के वूंड को क्लीन कर सकते हैं ठीक है एक आपके पास सीजर होनी चाहिए मल्टीपर्पज सीजर ठीक है मल्टीपर्पज सीजर हम ड्रेसिंग के लिए और बैंडेजेस के लिए यूज करते हैं ठीक है आपके पास स्प्लिंटेज होनी चाहिए आप कस्टमाइज भी स्प्लिंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं आपके मार्केट में भी मिल सकते हैं राइट आपके पास जो मेडिसिन हम रख सकते हैं वो सिर्फ डिस्प्रीन अलावे फर्स्ट एडर को डिस्प्रीन जब हम कब देते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट को डिस्प्रीन देते हैं ताकि जो है उसकी लाइफ को बचाया जा सके ठीक है अभी डॉक्टर कहकशां ताहिर आपको बताएंगी कि हार्ट अटैक के बारे में ठीक है इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए अल्कोहलिक स्वैब्स होने चाहिए राइट आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपके पास फेस मास्क होना चाहिए आपके पास जो है आप लेटेस्ट ग्लव्स हो ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए अगर आप डील करें ट्रामा डील करें ब्लीडिंग डील करें तो आपके पास ये गगल्स होने चाहिए क्योंकि अगर आपने अपनी आईज को कवर नहीं किया तो माइक्रो पार्टिकल ब्लड के जो है मरीज के जो है पेनिट्रेट करते हैं और आप जो है वो कांटेक्ट में आ सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपके पास जो है थर्मामीटर होना चाहिए ताकि जो है मरीज अगर कहीं फेब्राइल है तो उसका जो है फीवर देखा जा सके ठीक है और मुख्तलिफ स्प्लिंटेज होने चाहिए वाफिर मिकदार में एक खास बात जो है जब आप डील करें कोई भी इमरजेंसी तो ये जब आप यूज करें फर्स्ट एड तो दोबारा आप इसको रीफिल कीजिएगा ठीक है जी थैंक यू डॉक्टर युसरा Thank you very much, Ahmed. That was an amazing overview and orientation of this first aid box. Definitely, हमारे जितने viewers इस वक्त हमें देख रहे हैं, we all do understand that first aid is an important tool in quickly responding to accidents to ensure that injuries can be efficiently and promptly dealt. Of course, when it comes to first aid, there are a lot of factors that we have to account for. We have to know what are the right skills, and also along with that, we have to understand what are the standard equipments or the tools which are available in the market. Of course, these tools also need certain certifications before being marketed, and after getting those certifications done, then these tools are usually available in the market. In our today's session, what we have done by far is we have tried our level best to understand initially what is the definition or the aim of first aid in itself. Secondly, we tried to understand that what is this first aid box and what are must to have things in this toolbox. After this, what we'll be doing next is a very important component of our today's discussion, because what usually happens is whenever there is any panic situation, we try to be really prompt, we try to be quick enough, and at times instead of responding, what we do is we react. There is this very minor difference in being reactive and being responsive. And what is that difference? How to respond responsibly with efficiency. This is a very important thing to understand and to know more about it, that if we reach any scenario where any casualty has happened, any accident has happened, what should be our first role, what should be our first step. And to better understand that, we do have our
next speaker with us. Let me introduce him for you all. We have with us our next speaker. He is Imad Ali Rajput. He's also looking after trainings and skill development sessions at the facility of Liaquat National Hospital and Medical College, Karachi. So we'll be welcoming him next. Welcome back, guys. So as you have already seen the welcome slide for our next speaker, he is Imad Ali Rajput, also of course a trainer over here at Liaquat National Hospital, Karachi. Welcome, Imad Ali Rajput. Thank you so much, Yusra, for inviting. So a very quick question and a very valid question. What should we do first? Because of course we all want to help each other. We want ourselves to be safe. We want our loved ones to be safe. But at the moments when we are emotionally trying to be there and to perform at our best, what we do is we usually skip those important steps where we have to ensure our own safety. So over to you. What should we do first? All right. So first thing, if you're a responder, you need to be very calm. You don't need to panic in that situation. Mostly we do normally with the person who are very close to us, जो हमारे बहुत near to होते हैं. For suppose our blood relations. Whenever these things happens to us, we mostly panic the things. We do everything like जो हमें चीजें आ भी रही होती हैं, तो we do all the negative things or all the wrong things. So in that case, you need to be calm. You should be confident, you should have a command, and most importantly, you should have a common sense to perform, which is not very common, definitely. So this is what we're going to do in this scenario. The person, if there is a person who is suddenly collapsed, it can be anything. There can be a cardiac arrest, which is the #1 cause of the death. Heart disease are the #1 causes of the death in overall the world. But what else can happen if the person is having no heart issues? If the person is having no heart diseases, then what can happen? So then there are scenarios which can be lead to the cardiac arrest. अगर कोई एक शख्स है जो बहुत नॉर्मली आपके सामने बैठा हुआ होता है और आपको न्यूज मिल रही होती है कि अचानक से कि उस शख्स की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है एंड ही इज जस्ट 22 years old, राइट? तो कुछ इसी तरीके हमारे पास सिनेरियो आती है. नॉट इवन दे डोंट हैव इवन अ कार्डिक और हार्ट डिजीजेस. So that are called the cardiac arrest. The cardiac arrest itself, it's a condition. It can be anything. अगर कोई शख्स बैठा हुआ है और उसको खुशी अगर मिलती है और वो उस खुशी के अंदर उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. कोई खुदा ना खास्ता हैवी ब्लीडिंग की वजह से अगर वो शख्स अगर उसका खून बहुत ज्यादा बह जाता है और उसको क्योर ना किया जाए, उसकी फर्स्ट एड ना दी जाए, तो उस केस के अंदर भी वो शख्स बेहोशी की हालत में आ सकता है. नॉर्मली हम सी साइड्स की तरफ जाते हैं या हम आगे और इमरजेंसीज की तरफ भी हम आपसे बात करेंगे. तो सी साइड की अगर मैं एग्जांपल देता हूं, वहां पर नॉर्मली कुछ गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं कि उसके पेट से पानी जो है दबा कर निकाला जाए. तो दीज आर द रॉन्ग प्रैक्टिसेस व्हाट वी डू एक्चुअली. सो व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली, द थिंग इज you need to save yourself first, and then you have to look for the patient as well. If you are safe, then you are going to save the patient. For this case, you have to identify the scene, whether it is in the roadside or either it is the seaside or anywhere even in the home, right? So in that case, what you do, you scene safe, you look for the dangers around you. अगर कोई खतरा आपके सामने मौजूद है तो उस खतरे को दूर सकते हैं. फॉर सपोज इसकी एग्जांपल, अगर आपके पास रूम के अंदर एक शख्स था जो काम कर रहा था, ड्रिल मशीन के साथ वो काम कर रहा था और खुदा ना खास्ता उसको किसी भी रीजन की वजह से वो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है. जिस तरह से आप यहाँ पर एक डमी को देख सकते हैं, इस तरह से वो यहाँ पर एक फ्लैट पोजीशंस के ऊपर लेट गए हैं. तो वहां पर डेंजर क्या मौजूद है? That drill machine. Either you remove that drill machine or either you can handle that drill machine, right? So there can be anything आप use कर सकते हो. अगर आप उसको use कर सकते हो, you can remove it, और नहीं तो directly you can switch off that button and then you can remove it, right? So first thing is you have to identify and remove that danger. After removing that danger, you have to look
either the patient, either the person is conscious or not. Either it can be a conscious or unconscious. So we have to identify कि either the patient is conscious. So how we check? Normally हम कुछ इस तरह से move कर रहे होते हैं. So you can see the neck, right? You can see the neck movement. If the person is unconscious, we are giving a further damage, as already discussed कि हमने further damage उसको नहीं देना. So in that case, what you do? You just simply tap the shoulders just like with your two hands, and you call his or her name if you know, or if you don't know, then you just simply say some words. Hello, are you okay? Can you hear me? Hello? So this is the response what you check during your survey. So this is the response. If the person respond you give your first aid, which we'll be discussing further. But this is the emergency situation if the person is unconscious, right? So immediately what you do, you're all alone. You can do anything in that situation right now. So what you do, you call for help or call for the emergency. So there are some emergency numbers. हम hospital setups की हम बात करते हैं तो hospitals के भी अपने numbers मौजूद होते हैं. अगर वो नहीं है तो हमारा कुछ ambulance services हैं, उनको हमने फौरन call करना है to bring that help more, right? तो हमने मजीद help बुलानी है क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं उस केस के अंदर. But if you know the best way to give a first aid, so this is the right time. So what you do, you check the scene and you check the chest rise and fall of the patient for not more than 10 seconds, for at least 6 seconds. So not more than 10 seconds, for at least 5 to 6 seconds. So you have to check either the chest is rising or not. So if there is a notch chest rise and the patient is not giving any sign of his movement, so this is the point you have to identify that this patient needs a CPR. So what is CPR? CPR itself, it's called a cardiopulmonary resuscitation. Cardio itself, we call it for the heart. Pulmonary itself, it's the lungs. And for the resuscitation, we use word to reevaluate, or to restart the heart and the lungs. So this is right now we are going to perform. So how we perform the CPR? For that, you have to identify the center of the chest. The most importantly, हमें confusion होती है कि where actually our heart is normally, सब लोग answer कर रहे होते हैं कि it is on the left side, or someone says even on the right side. So heart is never on the left or even on the right. It is in the center of the chest. So where you identify, so this is the point where you identify the center of the chest. Intermammary line है. वैसे हम adult के अंदर अगर हम बात करें तो we never say this. We call it सीने की जो आखिरी हड्डी होती है उससे थोड़े से ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो you can identify, अगर कैमरा दिखा सकता हो. So this is the center point जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. मेडिकल टर्म्स के अंदर हम लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम कहते हैं इसको. सो दिस विल बी द लोकेशन वेयर यू विल बी प्लेसिंग योर हैंड. सो सीपीआर के अंदर हम करते क्या है, वी गिव द कंप्रेशन टू द चेस्ट and we give the 2 breaths. So compression के लिए this will be the position, will be calling the lower half of the breastbone. इस जगह पर आपने compressions को place करना है. So compression किया किस तरह जाएगा? So technique हमारे पास क्या होगी? इसके लिए you have to place your dominant hand, either you are using the right hand or the left hand. So I am the right-handed person, so I'll be using the right hand on the chest. First of all, make sure you are wearing your personal protective equipments. These are the gloves, or even you can use the mask. So for this, on that place, I will be placing my right hand. So it will be like this. This and the heel, I'll be placing here. On the center, I'll be locking with another one. So this will be the location. If the camera can see, this will be the place. Right? So this will be location. और आपने अपनी body को बिल्कुल 90 degree इस patient के ऊपर कुछ इस तरह से place कर देना है. So जब आप place कर देंगे तो ये आपकी प्रॉपर पोजीशन होगी जो आप कंप्रेशन के लिए आप देने के लिए तैयार हैं. तो कंप्रेशंस देने के लिए यू हैव टू काउंट अलाउड, क्योंकि हम 30 कंप्रेशंस हम काउंट करेंगे. आफ्टर 30 कंप्रेशन विल बी डिलीवरिंग अ ब्रेथ्स. तो कंप्रेशंस किस तरह से देने, मेक श्योर पहले तो हमने ये करना है. सो इट शुड बी गोइंग कंप्लीटली डाउन एंड देन यू हैव टू रिलीज. यू कैन हियर अ लिटिल साउंड इन दिस मैनिकन, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ a CPR. So proper CPR के लिए you have to place a correct position and you have to be correct depth. So correct depth की तरफ अगर हम जाते हैं तो maximum it should be 2 inches or 5 centimeter. Definitely इस चीज को हम identify नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ feedback devices commercially available होती हैं, उसके जरिए हम कर सकते हैं. So अगर कोई चीज भी available नहीं है, रोड साइड के ऊपर आप सिर्फ मौजूद है, तो in that case you do only hands on CPR. So this is the way you are going to do. I'm going to give a 30 compressions. After that, I'm delivering 2 breaths. So this is the way we are going. So we are starting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So this is the 30 compressions. Next, I'm going to deliver a breath. For breath, I'll be using a barrier devices, which is called the pocket mask devices. This is again a commercially available device. ये आप इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज कर सकते हो. इस मास्क की प्लेसमेंट को अगर आप देख सकें, सो दिस इज द मास्क, हाउ इट लुक्स. देयर इज अ नोजल एंड देन देयर इज अ बेस इन इट. ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप देख सकें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरह से है कि यू हैव टू प्लेस जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो हम इस मैनिकन के ऊपर हम प्लेस करके देखने जा रहे हैं. इस मैनिकन के ऊपर मैंने इस तरह से प्लेस किया. आपका जो हैंड होगा, उस हैंड को आपने इसके फोरहेड की तरफ इस तरह से कवर करना है. 2 fingers on the chin area, यहां पर आपने प्लेस करनी है, and this thumb you will be placing over that thing. ठीक है, अब क्योंकि आपकी एयरवे यहां पर ब्लॉक है, उस एयरवे को आपने ओपन करना है. तो ओपन के लिए आप करेंगे हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट. So this is the method you are going to use for the breath. So this is the way we are having a breath. A breath के लिए आप जब देंगे तो मेक श्योर करें कोविड प्रिकॉशंस हम यहां पर हम यूज करें. तो वी आर नॉट डिलीवरिंग अ breaths to the patients right now is work, but we are performing on the live CPR. So what we do, we deliver 2 breaths for over 1 second. So we are delivering breath 1, we wait for 1 second, and then we are delivering a breath 2. So this is the way a complete cycles, a complete हमारे पास cycle हो जाती है, so which is 30 compressions and 2 breaths. So this will continue until मेडिकल हेल्प अराइव्स. अगर आपके पास, क्योंकि आपने जब कॉल फॉर हेल्प की थी, मदद के लिए आपने कॉल किया था, तो हो सकता है कि उस केस के अंदर अगर आपके पास मेडिकल हेल्प आ जाती है तो देन यू हैव टू स्टॉप द सीपीआर. नेक्स्ट इज, अगर पर्सन मूव करता है, अपनी मूवमेंट दिखाता है अपने पास, या उसकी पल्सेशन या उसकी सांस की बहाली आप समझते हो कि वो आ गई है, तो इन दैट केस यू हैव टू स्टॉप द सीपीआर. नेक्स्ट, अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि दिस इज अ एक्सरसाइज एक्टिविटी, इसमें 2 से 4 मैक्सिमम अगर आप कंप्रेशंस करते हैं तो इसके बाद आपको भी खुदा ना खास्ता आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं. और इन केस अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो देन मे बी यू नीड अ सीपीआर, राइट? सो बीवेयर ऑफ इट. सो व्हाट यू डू, यू हैव टू स्टॉप सीपीआर. एंड लास्टली, इफ द सर्जन और फिजिशियन जो उस वक्त ईआर के अंदर मौजूद है, if they declares a death to the patient, so then you have to stop the CPR. So these are some situations in that scenario which we have to do. I'm quickly doing this thing. So what we do, we look for the scene and we save the scene. Next is we check the responses. Hello, are you okay? Are you okay? Can you hear me? If there is no response, you immediately call for help. And what we call for help, so next thing is that, so we call for help to bring the transportation if we nearby it. So next thing which I have, which can be commercially available, just for your information, this is called the AED. AED, it's called the automated external defibrillator, right? So this can be available anywhere and it is designed for the lay person. कोई भी इसको चला सकता है. इसकी बहुत सी जो है सक्सेस स्टोरीज भी हैं, अगर you can Google it. तो एक छोटी बच्ची ने भी इवन इसको जो है यूज किया हुआ है. ठीक है, तो there is no rocket science in it. There is a start button and there is a stop button. So ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए आपको दी जा सकती है. और इसके अलावा आप बेहतर जानते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये पीछे आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये इस तरह के इक्विपमेंट से हम पेशेंट को रिवाइव करने की हेल्प कर रहे होते हैं. सो एनी क्वेश्चन सो फार? वी आर डन विद द सीपीआर थिंग. 30 compressions and 2 breaths until we see a patient revive itself. Amazing, so thank you. Amazing talk, Imad. I think I have learned a lot from this whole demonstration, because I think the most common mistake that we usually make is, instead of trying to search for any danger for ourselves, we try to like directly jump in and try our level best to help the casualty. And what happens ultimately is, instead of having only 1 casualty at that scene, we end up giving 2. And that is a very big mistake that we usually are making. I hope everything was pretty much clear to our audience. Also, we'll be catering all your questions towards end of the session. If you have any questions related to this particular session, you can definitely drop it in the chat box. So, Imad, I just have a very quick question. When you came closer to the mannequin, to the casualty, indeed, what you did was you checked for the response by means of tapping on the shoulder. Are we supposed to check if the person is conscious by any other way, by means of checking the heart rate or breathing also, or that is enough? That is enough for us. Either
patient can be, as I just said, either if the patient can be a conscious or patient can be an unconscious. If you're a medical person and you know how to check the pulses and how you properly check everything, so then you can check the pulse as well, and that is the technique, right? So वो proper technique से आप perform करोगे तो आप identify कर सकते हो उसकी pulsation से भी, right? अगर नहीं आपको idea, तो then you just have to look the chest, either rise and fall of the chest. So this is the emergency situation. Normally we breathe, but normally if the person is not breathing, which is not very normal right now, so you have to immediately call for help right now. Okay, perfect. Thank you so much, Ahmad Ali. That was an amazing conversation. And with this, guys, ladies and gentlemen, I hope you all are learning a lot from our today's session. The topic of our today's session is preserving lives through learning, life-saving skills. And we are very much thankful to Liaquat National Hospital for this amazing collaboration for our today's session. Our today's session is meant for all our audiences. It doesn't matter from which profession you belong to, what is your age, what is your gender. Our today's session is all aiming for one thing, that is save a life, save a home. And that is an interesting thing that I learned and I got to know through Dr. Kakisha Tahir today. So quickly, now we'll be going ahead towards our next segment because we have less time but a lot to learn from our experts today. Our next expert is going to talk about casualty handlings if in case the patient or the person who's reporting is coming from any scenario where he has encountered bleeding scenario, fractures or burns. What should be our first response? That is what we are going to learn today. Our next speaker is again Dr. Ahmad Ali, and Mr. Ahmad Ali is going to help us learn that what are the kind of bandages which are available in the market and how can we actually use those to stop bleeding or to actually help any person who is into fracture the arm, leg, however. So we'll be discussing this with him, and along with that, burn scenarios. So we'll be coming back quickly as soon as the casualties and the patient is ready with these scenarios of bleeding, fracture and burns. Welcome back, everyone. This is me, Dr. Yusra Khan, welcoming you all on behalf of ICI Pakistan Pharmaceuticals in this amazing initiative known as Health 360. And our today's topic is preserving lives through emergency response skills. In our next segment, we are going to learn about casualty handling in case of bleeding, fracture, and burns. We have again with us Ahmad Ali. Ahmad साहब, सवाल ये है कि अगर हमारे गिरदो नवाह में कोई ऐसी इमरजेंसी दरपेश हो कि जहां किसी का खून निकल आए हाथ से, पैर से, सर से, some common emergencies. तो ऐसे में as a first responder, as a first reaction, first help, हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस सिनेरियो को मजीद बुरा होने से रोक सकते हैं until कि कोई emergency help, medical help आ जाए.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक मेडिकल किट, सॉरी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट आप लेके पहुंचेंगे आप अपने कैजुअलिटी के पास। उसके बाद आप फर्स्ट एड किट के अंदर जो है आप लेंगे गॉस पीस, और गॉस पीस अगर कैमरा दिखा सके तो गॉस पीस जनाब आप जो है वोंड पे रखिए जहां से ब्लीड कर रहा है मरीज। उसके बाद जो है उनको मरीज को बोलिए कि आप इसको होल्ड कीजिए। इन द मीन वाइल आप क्या करेंगे, आप ग्लव्स पहनेंगे, आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। आप पहनिएगा ग्लव्स, इतनी देर में ग्लव्स पहनिए, और फिर आप गगल्स पहनिए। राइट, ग्लव्स पहनने के बाद अब आप जो है ब्लीडिंग को डील कर सकते हैं। राइट, जी गगल पहन लिए है मैंने, और जनाब आप जो है मैं ब्लीडिंग डी अब मैं खुद टेक ओवर करूंगा और इसको छोड़ दीजिए। प्रेशर दूंगा और हार्ट लेवल से ऊपर ले जाऊंगा ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। ठीक है, आई प्रेशर तकरीबन 10 to 15 मिनट का मैं प्रेशर दूंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आप जो है इसको, अगर ये सॉक हो गया ब्लड के साथ, तो आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर जनाब और अदर गॉस पीस डाल देंगे, और फिर यू हैव टू गिव अ मोर प्रेशर, इसके ऊपर और प्रेशर दीजिए अगेन, अब जब तक ये ब्लीडिंग रुक नहीं जाए। अब हमने ये ब्लीडिंग को रोक दिया है, इसके बाद अब हम इसको जो है बैंडेज अप्लाई करेंगे, ताकि जब ये हम पेशेंट को शिफ्ट करें, मूव करें हॉस्पिटल की तरफ, तो ये जो है रास्ते में ब्लीड ना करे। ठीक है, राइट, तो ये हमारे हाथ की बैंडेज है, तो मैं 4 इंच की क्रेप बैंडेज यूज करूंगा, जिसको हम प्रेशर बैंडेज भी कहते हैं। राइट, प्रेशर बैंडेज ये जिसका कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि ये आपको राइट हैंड में लेना है, और इसको एस हैंड को आपने जो है लेफ्ट हैंड में लेना है। ये ऊपर वाला एंड आपको ओपनिंग एंड ऊपर रखना, ना कि ये यूं रखिएगा। ठीक है, तो आप नीचे से स्टार्ट कीजिए। ये अगर कैमरा दिखा सके, नीचे से जनाब आप स्टार्ट करेंगे इसको, और 2 रोल देंगे। राइट, और तीसरे रोल में आप एडवांस करेंगे। कितना एडवांस करेंगे, 1/3 आपने एडवांस करना है, और 2/3 आपने प्रीवियस क्लोज करना है। 1/3 एडवांस करना है, और फिर 2/3 आपने क्लोज करना, जबकि आपकी ये पूरी ड्रेसिंग क्लोज हो जाएगी। फिर एक रोल आप फिर वापस आएंगे उसी तरह। राइट, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, और बहुत ज्यादा आपने लूज नहीं रखना। उसके बाद जो है इसको आप सीजर से कट करेंगे। राइट, और इसको टाई कर देंगे। टाई करने के बाद अब आपने जो है मरीज से पूछना है कि कहीं ये बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है। इसके लिए आप मरीज को बोलिए कि आप अपनी फिंगर ये मूव करें। अगर इजीली मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये टाइट नहीं है। दूसरा, इसका कलर और इसका कलर आप कंपेयर करके देख लें। अगर जो है कहीं वो बिलुश तो नहीं हो रहा, कहीं आपने बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं कर दी कि जिसकी वजह से सर्कुलेशन रुक गई हो। ठीक है, राइट, ब्लीडिंग आपको पता है, ये ब्लीडिंग हमें नजर आ रही थी। ब्लीडिंग 2 टाइप्स की होती है, एक तो आपको नजर आती है, राइट, वो आप इजीली स्टॉप कर सकते हो, और एक वो ब्लीडिंग है जो इनसाइड होती है, तो वो यकीनन उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। चलें, थैंक यू टू डॉक्टर युसरा। मच अहमद साहब। और अहमद साहब ने जैसे कि व्यूवर्स अभी हमें बताया कि किस तरह से हम ब्लीडिंग की अगर कोई कैजुअलिटी हमारे सामने मौजूद है, तो एज अ फर्स्ट हेल्प या फर्स्ट एड हम किस तरह से बैंडेज कर सकते हैं। अहमद साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, बहुत कॉमन इंसिडेंट हम देखते हैं कि अक्सर लोगों का गिर जाना, स्लिप हो जाना, और ऐसे में सर से ब्लीडिंग का होना। दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो जो मैंने भी अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ में एक मरतबा विटनेस किया है। बिलीव मी और नॉट, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू अदर देन द फैक्ट कि आई वाज आल्सो लाइक वेरी पैनिक। तो क्या कोई ऐसी इजी टू डू बैंडेज है जो ब्लड लॉस को उससे हमें बचा सके? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंडली, जब हम ब्लीडिंग को रोकने की बात कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन से मुझे समझ में आया कीवर्ड इज प्रेशर। यू हैव टू अप्लाई प्रेशर, एंड जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को आपने एलिवेट कर देना है अबव योर हार्ट लेवल, सो दैट ब्लड लॉस जो हो रहा है उसके वॉल्यूम में कमी आए। आई होप आई एम राइट। अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हमें हेड ब्लीड के बैंडेज की भी बता सके अहमद साहब, सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल।
चलें जी, ओ थैंक यू। राइट, कभी कभी हेड पे भी चोट लगती है, मोस्ट कॉमन बच्चों में लगती है, बच्चे खेलते हैं, ठीक है, अडल्ट को भी लग सकती है, कोई चीज जो है आके हिट हो सकती है। तो जहां ब्लीडिंग हो रही है वहीं पे आपने जो है गॉस पीस रखना है और प्रेशर देना है, फर्म प्रेशर हो, ठीक है। कितनी देर के लिए? 10 to 15 मिनट के लिए प्रेशर देना है। सिमिलर वे कि अगर उससे ब्लीडिंग जो है आपका ये गॉस सोक हो गया है तो इससे जो है इसको रिमूव नहीं करते, अगर इसको रिमूव करेंगे तो अगेन दोबारा फिर से ब्लीडिंग जो है वहां से गश करेगी। राइट, तो इसको रिमूव करने की बजाय इसके ऊपर अगेन एक गॉस और लेंगे और फिर वापस दोबारा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अगेन 10 to 15 मिनट आपने प्रेशर अप्लाई किया। अब ये जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है। अब हम इसको अगर ऐसे ही भेज देंगे तो क्या होगा? दोबारा वापस ब्लीडिंग स्टार्ट होने का चांस होता है। तो हम इसको कवर करेंगे, इसकी बैंडेज करेंगे और यहाँ पे हम जो है यूज करते हैं तकुनी पट्टी, ट्राइंगुलर बैंडेज यूज करते हैं जी, ठीक है। आप थोड़ा मरीज को बोलते हैं कि आप ये होल्ड कीजिए। राइट, ये ट्राइंगुलर बैंडेज है, इस तरह इसको हम रखेंगे ताकि इसकी आईज और ये आईज पे ना जाए, सिर्फ फोरहेड पे कवर करें और इसको प्रेशर अप्लाई हो, ठीक है। राइट जी, अगर ये दिखा सके कैमरा तो इस तरह पीछे से प्रेशर देना है। राइट, पीछे से प्रेशर दीजिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, ठीक है। और पूरा आईज देख लीजिए, फोरहेड देख लीजिए, वापस एक रोल करेंगे ये दोनों का और यहाँ पे फिर फेस पे आके आप जो है एक टर्न देंगे, एक जो है बैंडेज का। राइट, यहाँ पे जी आईज को देखते हुए ये रोल करेंगे और ये जो एक एंड और था तकुनी पट्टी का यहाँ पे, और यहाँ पे आके जो है ऊपर जहां आपका ब्लीडिंग थी, जहां गाज था यहाँ पे रखा हुआ, वहां पे आपने इसको टाई कर दीजिए। अब ये इजीली पेशेंट चलेगा, जो जर की मूवमेंट भी होगी, कहीं आप मोबाइल करेंगे, एम्बुलेंस में जाएगा तो यकीनन जो है ये सेफ होगा, इसको दोबारा ब्लीडिंग नहीं होगी यकीनन। Amazing, amazing, Ahmed साहब. I think it was an amazing demonstration. Quickly एक क्वेश्चन आपसे मैं ये भी पूछूंगी, क्या अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे में, क्योंकि जाहिर सी बात है हड्डी का टूटने का मतलब ये है उस पर प्रेशर देने से मजीद डैमेज हो सकता है, तो फ्रैक्चर्ड हैंड को कैसे हैंडल कर सकते हैं? राइट जी, फ्रैक्चर जो है यानी बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्चर हैं। सिंपल फ्रैक्चर है जिसमें कोई वुंड नहीं होता है, फिर जो है कंपाउंड फ्रैक्चर है जिसमें यकीनन उसमें वुंड होगा, ब्लीड भी करा होगा, तो उसको हम ब्लीडिंग भी रोकेंगे। फिर इसी तरह जो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, 2-3 जगह से जो है हड्डी टूटी है। फिर कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, डिप्रेस फ्रैक्चर, स्पेशली आपकी स्कल की बोन जो है वो चोट लगने से डिप्रेस हो जाती है। राइट, वो फ्रैक्चर की जो टूटी हुई बोन है वो एक शार्प जो है शार्प चाकू की तरह काम करती है। अगर हमने उसको इमोबिलाइज ना किया, ऐसे जो है एम्बुलेंस पे भेज दिया, तो क्या हो सकता है कि वो जो शार्प एजेस थे ब्रोकन बोन के, वो वेसल्स को और नर्व को डैमेज कर सकते हैं और जो है अब ये पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इवन के कभी कभी पेशेंट का जो वो आजा है, वो लिम्ब है, वो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, हमने उस जो ये सपोज यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, यानी आपको तो पता नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें हमने कहा कि सिंपल फ्रैक्चर में कंपाउंड में भी आपको सिर्फ वुंड नजर आएगा। ये कंफर्मेशन फ्रैक्चर की कहाँ होगी? वहाँ हॉस्पिटल में एक्सरे होगा तो पता चलेगा कि ये फ्रैक्चर हुआ या कहीं और लिगामेंटल इंजरी है, ठीक है। तो अब आपने इसको इमोबिलाइज करना है, तो अगेन इमोबिलाइज के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। राइट, ये स्प्लिंटिक है, ये यहाँ पे हम रखेंगे 1 जॉइंट अबव और 1 जॉइंट बिलो रूल है यहाँ पे। राइट, इसके ऊपर जो है बैंडेज करेंगे। राइट जी, उसी तरह आपने बैंडेज करनी है ताकि जो है मरीज को इसके एजेस भी ना लगे। पूरा आप कवर करेंगे, वो एरिया आप कवर करेंगे, पूरा आपने बैंडेज की इसको, और फिर वापस एक टर्न, एक रोल आपने और दिया। राइट, और मरीज का जो हाथ है वो स्पोर्टेड हो, कहीं इधर उधर वो नहीं हो कि मूव कर रहा हो, ठीक है जी। अब अगर ये ऐसे चलता हुआ जाएगा
तो अगेन बोन मूव करेगी और उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। अब उस पेन को रोकने के लिए हमने यहाँ तो इमोबिलाइज कर दिया, अब इसकी मूवमेंट को भी हम इमोबिलाइज करेंगे। तो ये है पोजीशन इसकी इमोबिलाइजेशन की। अब हम इसको एक तकोनी पट्टी लेंगे जिसमें एक हम सिलिंग बनाएंगे, आर्म सिलिंग कहलाती है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि ये जो लॉन्ग एंड है ये आप इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह, और ये जो शॉर्ट एंड है ये आप इस तरह रखिए और यू स्लाइड करेंगे। आपने यू स्लाइड की राइट इस तरह। अब ये मरीज इजीली जो है कहीं पे भी मूव हो सकता है, इसको पेन भी कम से कम होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लाके आपने सेफ्टी से टक कर देना है, ठीक है जी। Amazing demonstration, Ahmed Saab. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I think it was indeed a very important session or important demonstration to learn about how to manage casualties if the person is coming up with a complaint of bleeding and fracture. Thank you so much, Ahmed Saab. That was all from your side for this segment. नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे वापस हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर कहकशा ताहिर की जानिब। By far हमने जिन चीजों को लर्न किया उसमें we got a chance to know about first aid kit. We got a chance to learn about emergency response skills, how to assess danger in any situation wherever any casualty is present. Also, we tried our level best to learn about performing CPR. We got to know that CPR is not to be performed on a person who's conscious and is properly breathing. It is for that patient who is unconscious and not breathing. So we have to resuscitate them so that they can again resume breathing normally. Then we got a chance to learn about some primary bandages in case of bleeding and fracture. Now we'll be coming back to our next expert, Dr. Kahkasha, and what we are going to tell you in this segment. Stay tuned to that. Welcome back, viewers. So we have here with us Chairperson Research and Skills Development Center, Liaquat National Hospital, Karachi. She is Dr. Kahkasha Tahir. Dr. Kahkasha, you have such an amazing team, and what a talented crew we have over here. They made everything look so easy and so doable. But still, there are a few questions that I have in my mind, and we are also receiving some questions in the chat box. So in case our viewers have any questions, you can drop it in ask a question poll, which is right there towards right of your screen. So Dr. Kahkasha, a very common question. In case of having elderlies in your home, or maybe even if you meet a stranger, this is quite possible they may go into heart attack situation. Is there anything we can do to help them reach to the medical facility safely? And also, are there any first aid techniques available and that we can learn when it comes to environmental hazards? By means of environmental hazards, I mean heat stroke, maybe, because we know it's not so old story that we have actually been through the heat stroke disaster in Karachi itself. So what can we do as first steps in these scenarios? Yes, thank you, Dr. Yusra. I would definitely like to brief a little about these three conditions, as I mentioned earlier. The injury emergencies, the medical emergencies, and the environmental, as you said, the heat stroke. Now, if the scenario you gave me, like you come across a victim who is a heart attack patient, you are attending a ceremony, or you are at your workplace, or you are at your home, and God forbid, a relative of yours get this condition. So what to do? So for heart attack, there are two things to remember. Do not try to move the patient. Make him still as much as you can, and do not try to transfer the patient into your own vehicle. Try to get the ambulance, because it is a equipped facility,
and the patient can get the oxygen and other important stability maneuvers, and the trained staff in the ambulance. So try to get that. And the only thing you can give to this patient at home is an aspirin, which comes with the name of Disprin. So Adi Goli, Disprin ki is enough for this patient, which can stabilize the process and the damage the heart attack causes to this victim. So that's the first aid about the heart attack. Anybody can do that, and try to transfer the patient to a facility which is a tertiary care hospital. What I mean by a tertiary care hospital is where cath lab particularly is available, and God forbid, if you are dealing with a patient of a stroke, a neurological facility is available. So that's the first aid about these two conditions, the heart attack and the stroke patients. And then comes the asthma. You may have a patient who is having a severe attack of asthma. So the patient would carry the inhaler or sort of his medications with them. Such patients do have them. So try to find out if he has that, and try to give that to him, because the airway stability is the thing that you require at that time to such patient. Then comes the hypoglycemia, what we call in common language low sugar condition, which is a really life-threatening emergencies. Now people confuse hyperglycemia, that is the high level of glucose, as real concern. Let me clarify it to you and others as well, that hyperglycemia is not a life-threatening condition. Try to understand, low blood sugars really seize the brain. They can. So you have to have the sugar replaced immediately, and that's why you must carry some sort of sweetened, you may have some candies or juices with you. You may carry them. So it is usually told to the public, if you are a patient of diabetes, that is in common language we call a sugar patient, to do carry some sweetened things with you. And why is that? Because you are on medication, and the medication can drop the levels of glucose so badly that it can bring an emergency to you. So that's important that you replace the sugars as soon as possible. The high levels of sugars would only bring some symptoms, the headache and the heaviness on the patient, which may be later treated with the anti-glycemic drugs, that is the anti-glucose drugs. But the low sugars may just get you collapsed anytime. And second thing, the symptoms of low sugars is very much confused with a stroke patient. They look very similar. थोड़ा सा उसके अंदर भी you will find the patient will be having a drowsiness and headache and low level of orientation. So that happens to a low sugar patient. So you really need to give glucose so that at least you can save that patient. So that's about the medical emergencies. Then you mentioned the environmental emergencies are very common, of which the heat stroke we come across at especially in our city. And like these days it's Ramadan, and in Ramadan you already are dehydrated because of long fasting intervals. And with that, the extreme heat conditions outside the buildings and stuff, there are people who work in such environment. So they may definitely come across with the heat stroke. Now, heat stroke, remember one thing, the treatment of environmental emergencies is very simple. Like you said, there are simple maneuvers which can save life, a costly thing. The opposite of environmental emergencies is the
temperature regulation. If it is a cold emergency, you have to maintain the heat. If it is a heat emergency, you have to maintain the cold. Now, how is that possible? Number one, remove the patient from that extreme weather, from that extreme environment. If it is outside in a ground or somewhere under the sky, bring that to a building which is a little colder than the outside environment. Try to hydrate the patient, give juices or fluids and water if available and the patient is conscious. And if not, if you have a pool around or you have a shower around, try to wet completely, drop the water on that patient. A bucket or anything would do enough good with such patients. So दो तीन चीजें. First is remove from the heat environment. Second is completely submerge the patient into water if you can, and if he can drink it, try to hydrate that patient. Same goes with the burns emergencies as well. Now, but the burns comes in under the heading of injury emergencies. So I just mentioned the medical emergencies, and then the environmental, and now comes the injury emergencies. As Emadali mentioned, the bandages which you require in bleeding. Bleeding you can see, and bleeding you can see comes under the heading of a blunt trauma. There are conditions where there are damage to internal organs, but the bleeding is not outside. You can't see it. So you just have to move such patients to the hospital. There's nothing much you can do in bleeding you can't see. But the bandages, you have already have the demo. So then comes the burns in injury emergencies. And for burns as well, there has been a myth since our childhood, at least my childhood. I was told to apply the toothpaste or the Burnol over any burn, and this will bring down the hazards it causes. That doesn't happen. Let me clarify it as well. Burnol or any kind of such medication only has fluoride in it, and fluoride is a cooling agent. So what it does, actually, it only soothes for the moment, and you think the damage is not there anymore, which is wrong, which is not the case. For burns, any kind of burns, like we have steam burns while we are cooking, our women, when they are having through cattle, we can get a steam burn on any other cooking utensils. Or you may have a hot liquid burn, like garam tel or garam pani, or you may have some direct fire exposure. So whatever the case is, remember again, remove from the heat environment. How do you get rid of a fire is a different story, because that comes in fire safety things. Like I can briefly tell that, like अगर चूल्हा आग पकड़ लेता है या because that's the usual scenario. हमारे घरों के अंदर usually what happens is with the stove. Ladies के साथ ही ये usually हो रहा होता है, या फिर it happens with the electrical utensils अगर short circuit हो जाता है तो. So the easiest thing which is available at home is atta, because that seizes the oxygen supply to that fire. तो रेत usually घर में available नहीं होती है, लेकिन अगर रेत available हो तो you can put that on the fire, so that at least जो fire ने पकड़ लिया, it only takes 2 seconds of 2 minutes for your whole house to be burned. तो आग is that fast. तो that is why जहाँ आग को की supply को break cycle करना important है, वहीं burn emergency को deal करना भी important है. And how do you do it? You remove the patient from that heat environment and just bring down under the tap water. Simple water, not cold, not hot, simple tap water. And keep running the water for that organ under, put that organ, if it's a hand, if it's an arm, if it's a leg, whatever it is, just bring the patient, bring that part of the body under the water and keep running the water for as long as you can, at least for 10 to 20 minutes.
and that brings down the heat. So now the fluoride, which was only soothing you, the water actually brings down the damage, the internal damage. So that you do with burn, and for fire, I have told you, try to remove break the circuit. So that's how you deal with 3 kinds of emergencies. And do's and don'ts, as we discussed earlier, are important. Like, don't panic in the situation. Now you know, and try to be as calm as possible so that you can bring some good to the patient. So that's about it. Right. Thank you so much, Dr. Kaikisha Tahir. It was indeed very important information to share with our audience. We today got to know that in case of bleeding, we have to apply pressure. In case there is any casualty reported with fracture, what we have to do is we have to support that fractured part and also immobilize it. When it comes to burn, today we got to learn, and we actually were able to bust a lot of myths, because yes, it is a very usual practice. What we do is that whenever there is any case of burn, first thing that comes up our mind is maybe we can apply toothpaste, but today I got to know that that is not the right thing to do. And of course, I do believe our audience was also able to bust a lot of such myths today from this session. So guys, from here onwards, what we'll be doing next is have your questions answers. So let's go ahead towards our panel discussion segment. Welcome back, guys. So what we learned today is that it is highly important to master this skill, which is life-saving skill. Emergency response skills are often usually imparted. These trainings are usually conducted at multiple facilities, and one of those facilities is Liaquat National Hospital, Karachi. It is a skill you might use to rescue your loved ones. It can bridge the gap between an incident being discovered and the arrival of emergency services. In effect, early intervention during a rescue can make a crucial difference between life and death. You can save lives. And I started our today's session with that fact that it usually takes hardly 4 minutes for a blocked airway to lead that casualty towards death, and an ambulance to usually takes 8 minutes to arrive to that area of incidents. So what we can do best is call for the emergency help, and in the meantime we can provide them with the first aid. And here we have our panel of experts with us. Our today's guests, Dr. Kaikisha Tahir, Dr. Ahmed Ali, and Mr. Imad Ali Rajput. First of all, thank you so much, each and every one of you, for being here. It was indeed a pleasure discussing this amazing topic, and I already feel like a hero, that if I would be able to save a life, maybe I can be a hero in somebody's whole life history. And of course, we can learn this skill. So there are some very interesting questions coming up, Dr. Kaikisha. I'll be forwarding those questions to you. First question that we have is a very interesting question. Dr. Kaikisha, हमसे ये पूछा गया कि what are the common mistakes
that are usually seen while providing first aid? वो कौन से common mistakes हैं जो हो जाते हैं? एक तो इमाद भी अपने सेशन में बता रहे थे कि हम पैनिक हो जाते हैं, कॉमन सेंस लूज कर देते हैं. व्हाट विल यू से? वेल आई वुड से सबसे पहले तो हम बहुत क्राउड लगा लेते हैं जो अगर कैजुअलिटी ओपन एयर में होती है, जो हम आमतौर पे रोड साइड वगैरह पे देखते हैं, कोई औरत बेहोश हो गई या कोई गर्मी की वजह से, या कोई मजदूर, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा गिर गया, या एनी रोड ट्रैफिक इंजरी. तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा मरीज एक होता है, 50 लोगों का वहाँ पे हुजूम होता है, राइट. जो उसकी सांस ऑलरेडी रोक रहा होता है. तो दैट शुडंट बी डन आई सपोज. एंड इफ समवन नोज, लाइक आई वुडंट से कि मैंने बहुत सारे इमरजेंसीज को डील किया हुआ है रोड साइड के ऊपर भी, एंड आई हैव डन थिंग्स. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की बातें हैं. अगर एक मरीज पे 50 लोग उसकी सांस बिल्कुल, उसकी स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस रोक के खड़े होंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, जो उसमें बची होगी जान. तो प्लीज ऐसा ना करें. दूसरी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ पे जरूरत होती है, कोई मार के चला गया, कोई खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंसेस हमारे साथ जो मिसहैप्स हो जाते हैं यहाँ पे इस शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, तो उस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे होते. तो जहाँ करने की जरूरत है वहां हम करते नहीं, और जहाँ पे जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजों की वो हम कर रहे होते हैं. तो आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड. सबसे कॉमन चीज ये है. एंड डूज एंड डोंट्स हमने डिस्कस किए हैं आज के सेशन में. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मोबाइल हर एक के पास अवेलेबल है. निकालें, फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें, कोशिश करें पेशेंट को मूव कराएं. मैंने ऐसा भी किया है. आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि मुझे इमीडिएटली अगर एक रिक्शा अवेलेबल मिला तो उसमें बैठ के भी पेशेंट को ट्रांसफर कराया, विच शुडंट बी द केस. द केस शुड बी आइडियल ये है कि आप एम्बुलेंस लेके जाएं. लेकिन एम्बुलेंस अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को वहीं पे छोड़ देंगे. तो दैट इज द केस. हम अपने यूनिफॉर्म लोगों से बहुत डरते हैं, और जाने क्यों डरते हैं. देखिए, जो भी रेपुटेशंस हैं, चीजें हैं, वो एक अलग बात है. लेकिन मैं भी शहर में रही हूँ और हमेशा मैंने आपको पुलिस वाला मिलता है, आपको रेंजर्स मिलता है, आपको कोई भी मिलता है, ask them for You help. ask for help. Yeah. Yes, yeah, That's the first thing to do. And that's absolutely right, because there are like a lot of pre-assumptions that we have, और वही हमारे लिए barriers बन जाते हैं when it comes to responding. We have another question here in the chat box, which is that how do we get certified for first aid? Is there any course that LNH is offering maybe, या हम किस तरह से इसको properly सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं. बाय स्टैंडर्ड ट्रेनिंग्स होती हैं. इसके अलावा कॉर्पोरेट नॉन हेल्थ केयर एक रेगुलरिटी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अवेलेबल है फर्स्ट एड की. आप यू कैन बिकम अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर बाय गेटिंग दिस फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग एंड गेट सर्टिफाइड थ्रू इट. एंड फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अलग ट्रेनिंग्स होती हैं. तो यस, वी डू हैव ट्रेनिंग्स. Come to us, we will explain and we can definitely guide you through. Right. Thank you so much, Dr. Kehkashan. I'll move towards our next panel of experts. That is Ahmed and Imad, who are certainly sharing the same screen right now. So Ahmed and Imad, the question goes to you guys. हम usually first aid सीखते हैं, और शायद बहुत सारे लोगों ने आज बहुत कुछ सीख के ये अहद भी कर लिया होगा कि we'll try our level best to help others. But usually होता ये है कि ऐसे scenarios में there are a lot of people who are panicking also. And instead of focusing on the casualty, आप उस rush से अक्सर घबरा जाते हैं कि आपको पता है क्या करना है, बट people usually don't let you do that. वो अपने तौर पर हर एक शख्स कोशिश कर रहा है कि उसकी हेल्प कर दे. तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दैट डिजास्टर सिचुएशन? वो जो chaos है उससे हम कैसे बच सकते हैं? व्हाट डू यू गाइस, हम क्या करें? देखें जी, हम पाकिस्तानी लोग हैं, जब भी किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो हम सारे रश करके वहां चले जाते हैं, राइट. और जनाब वो उसको उठाते हैं और फिर जो है उसको कोई पानी पिलाना शुरू करता है, ठीक है. वो बेचारा बेहोश है तो पानी कहाँ जाएगा? अगर आपने डाला तो यकीनन लंग्स में जाएगा. एक इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करता हूँ. इमरान खान साहब जो है एक वहां पे स्टेज से नीचे गिरे, ठीक है. वो तकरीबन 15-16 फुट की नीचे गिरा था, स्टेज की ऊंचाई थी, और वहां से नीचे गिरे. और लोगों ने किस तरह उठाया कि एक ने पांव पकड़ा, एक ने उसका जो है
बाजू पकड़े, उसको उसका Right. अर्थ बना, उसका So अर्थ बना। mishandling of the casualty is very much possible. हेलो, Yes, yes. उसका एक अर्च बना, और खुदा न खास्ता अगर कहीं स्पाइनल इंजरी होती तो ये इमरान खान साहब बेचारे प्रेसिडेंट Right. प्राइम मिनिस्टर सही है, ठीक है। बनने से पहले पैरालाइज सही हो है। जाते। ठीक है, तो ठीक है। ऐसे So लोगों को नहीं, the takeaway point over here is if we know what to do, then we should do it. Otherwise, mishandling ना करें, वरना जैसे कि अहमद साहब खुद भी कह रहे हैं कि एक फ्रैक्चर को हम खुद ही 4-5 फ्रैक्चर्स में तब्दील कर सकते हैं। We are very short on time, so with due respect, this is the time to say thank you so much to all of you. Dr. Kahkasha Tahir, thank you very much. I feel really privileged that you have partnered with ICI Pakistan Pharmaceuticals for this amazing session under the banner of Health 360. And this whole recording will also be available for all our viewers who are right now watching us on the link, which is health360.com.pk. You can go on to agenda and you can replay, watch, and learn about these important skills that our today's trainers have already discussed. Thank you so much, Imad Ali Rajput, for being here. Learning CPR from you was literally a very amazing journey for me and all my viewers. And also thank you very much, Ahmad Ali Saab. And I'm really very much hopeful that our audience from now onwards are gonna maintain their first aid box in the right way possible, as you have already discussed. Thank you so much, everyone. And with this, अपने तमाम देखने वालों को मैं ये कहना चाहूंगी, stay tuned, because this is not the end. This is the first session that you have seen or that you have joined. There's a lot more coming up on the same platform, which is health360.com.pk. Till then, this is me, your host for the day, signing off. Take care of yourself. Stay healthy, stay blessed. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.